हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटाफोरिकल लिटरेचर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट जॉर्ज इथरेज को और बात करें रेस्टोरेशन पीरियड की। सो द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 इज मेंशन एज द रेस्टोरेशन एज और द एज ऑफ टाइटन बिकॉज द मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड. In the year of 1660, Charles II was brought to the throne, and the restoration of Charles II brought a new era both in life and in literature. The restoration actually replaced the power of the monarchy and Puritan ethos. It brought the power of a parliamentary system under the two parties, Whigs and Tories, and both parties increased social stability. Thus, the period from 1660 to 1700 has the most importance and it is called the Age of Restoration. And the main dramatists of the Restoration age were George Etheridge, William Wycherley, William Congreve, Ephraim, John Vanbrugh, and George Farquhar. अब बात करते हैं रेस्टोरेशन प्ले राइट जॉर्ज इथरेज की। इनका जन्म 1635 में मैडनहेड साउथ इंग्लैंड में हुआ है। उनकी मम्मी का नाम मैरी पॉनी है। इन्होंने विलियम स्कूल से पढ़ाई की थी और बाद में लॉ की स्टडी क्लेमेंट इन लंदन में की थी। अब बात करते हैं उनके फेमस लिटरेरी कैरियर की और उनका पहला प्ले था द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब, जो कि पब्लिश हुआ था 1664 में। एंड दिस प्ले इंट्रोड्यूस्ड अ स्टाइल ऑफ विट hitherto unknown upon English stage, और ये काम काफ़ी कमाल का था, काफ़ी फेमस भी हुआ था। इन 1668 ही brought out She Would If She Could, a comedy in many respects admirable, full of action, wit of spirit, and immoral at the same time. This play, The Man of Maud, जो पब्लिश हुआ था 1676 में, इज फेमस फॉर इट्स क्रिएशन ऑफ द ग्रेट fopling flutter. It is believed that it was Etherege who introduced the comedy of manners to the English theatre. He was knighted in 1680 and married a rich widow. He was sent by Charles II on a mission to the Hague, and in March 1685 was appointed resident minister in the imperial German court and Regensburg. His years spent at English minister to ratisbon and recorded in his letterbook. Etherege died in Paris in 1691. और आगे मैंने यहाँ इथरेज से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।